Hello friends, today we are going to see that how to add the picture box from the toolbox. So let us see first of all, right? So here we are having in toolbox the option of picture box. Now you will place it, right? आप उसे place करोगे and afterwards how much you want the size, according to that you can take it. But now you want to add the picture. So how you will add the picture over here? So let us start. Here we are seeing one arrow. आपको यहाँ एक arrow दिख रहा है. इसके ऊपर आप क्लिक करोगे एंड यू विल गो फॉर चूज इमेज राइट योर लोकल रिसोर्स मीन्स वेर you are having in the disk, or you can go for the project also. Click on import. Okay, now I have the picture over here, one picture that I will select and click on OK. Now just see over here, you can see the picture. With that you have to see the settings also. Here there are settings, यहाँ बहुत सारे settings है, like size mode, normal, then we have stretch mode. You can see the stretch mode over there, right? वो देखो stretch हो गया, पूरा cover कर लिया. And after that means the whole auto size means whatever the size it is, according to that the picture you will see. आपको वैसा ही size में दिखेगा. Center image यानी बीच में दिखेगा. Okay, then zoom, तो वो zoom करके zoom in zoom out जैसा. Okay, and then normal you can see over here, right? So this is the way that you can add the picture. This is very helpful, आपको बहुत helpful होगा. कैसे helpful होगा? जैसे आप कोई फॉर्म बना रहे हो और उसमें आपको फोटो डालना है, लोगो डालना है, यू वांट द कंपनीज लोगो, तो आप वो कर सकते हो. अनदर थिंग, क्या आप उसमें ऐसा भी कर सकते हो कि हाँ आप जैसे अपना आईडी बना रहे हो, आईडी जैसे हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि स्टूडेंट्स के आईडीज और एम्प्लॉयज़ के आईडीज, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर होता है इन विच यू वांट टू प्लेस द पिक्चर, तो वो हम कर सकते हैं. सो दैट इज़ द थिंग. ओके, थैंक यू.